Let's go to 2 Corinthians, दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब. 2 Corinthians chapter 5. I'll begin reading from verse 12 onwards. 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे. Though we will not cover all of this in fullness and just look to one verse, I thought it was best if we read through the entirety of it. दूसरा करंथियों, if you have it, say amen. Amen. Chapter 5, verse 12. For we do not commend ourselves again to you, but give you opportunity to boast on our behalf, that you may have an answer for those who boast in appearance and not in heart. For if we are beside ourselves, it is not for God. Or if we are not of sound mind, it is not for you. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Old things have passed away. Behold, all things became new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Christ Jesus, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors of Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. The message that is on my heart is, he became sin. He became sin. Today we are going to look very briefly at a portion of Paul's second letter to the church of Corinth, but particularly verse 21. हम आज ज़्यादा वक्त जो है वो 21वीं आयत पर ही बिताएंगे. Paul wrote 2 letters. Some say he wrote 3 letters. 1 letter is missing, but in the canon that we have, जो खुदावंद का कलाम हमारे हाथों में है, there are 2 letters that Paul has written. And the second epistle is very different from the first. It's a very tender epistle. No doubt, Paul is making corrections. जब आप पहले करंथियों के हाथ को पढ़ते हैं, तो it's almost like Paul has a heavy hand. बहुत सख्ती से वो बोल रहे हैं, corrections ला रहे हैं खुदावंद की कलीसिया को. And even till today we use that portion of scripture. हम आज भी इस कलाम के हिस्से को लेते हैं. And when it comes to discipline within the church and order within the service, we turn to that passage. But when we think of the second letter to the church, जब हम दूसरे खत को देखते हैं, there is a bit of tenderness in the heart of Paul. पालूस रसूल जो हैं, वो एक टेंडरनेस के साथ उनके साथ अपील कर रहे हैं. He's appealing to them, bringing the doctrine, the teaching of reconciliation. कि ये एक बार फिर जो मिलाप
बाप का इंसानों के साथ हुआ है, ये कैसे हुआ है या किसके सबब से हुआ है, that is his whole work in the second letter. That we would consider this the central theme. Everything that took place was for God to reconcile us to himself. जो कुछ भी मसीह की जिंदगी में हमने देखा वो इसी मकसद के लिए था कि बाप हमें अपने साथ कैसे फिर से मिला रहा है. How is God reconciling us back to himself? Laid before us today, आप देख सकते हैं कि अमूमन Aksar, most often, we take the communion right after our time of worship. But we will do this a little bit later today. And there is a reason for that. Here lies the Lord's table. खुदावंद की जिसको हम मेज कहते हैं. And here there is the body या bread जिसको हम कहते हैं कि ये मसीह का बदन है. This is the body of Christ. And the cup, that is the covenant blood that is of Jesus. This is what reconciles us. मसीह का बदन टूटना, उसका लहू बहाया जाना, it is this that reconciles us. ये है जो हमें फिर से बाप के साथ मिलाता है. John 15:13, यूहन्ना 15वां बाब 13वीं आयत. Greater love has no one than this. इससे बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं है. इससे बढ़कर मोहब्बत बयान नहीं कही जा सकती. Than to lay down one's life for a friend, के अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे. There's no greater love. But that love is what has reconciled us. That life that was laid down is that which has reconciled us. But this is not just the laying down of any ordinary man. ये किसी आम शख्स का बदन या किसी आम शख्स का लहू नहीं है. This is sinless body and sinless blood. That is where I want to spend our time this afternoon. Now, for some, this may appear elementary. कुछ हैं जिनके लिए शायद ये होगा कि, man, this is quite elementary stuff. But I tell you, loved ones, there's great significance in this foundational truth. ये जो बुनियादी सच्चाई है ना reconciliation की, there is great benefit कि हम बार बार इसको दोहराएं, बार बार इसको समझने की कोशिश करें. And I want to begin by saying this, कि किसी भी शख्स के बस की ये बात नहीं है कि वो खुदावंद के जलाल और उसकी जात के ऊपर बोले, including me. It's grace. It's grace. The words of the great Charles Spurgeon, he said, this is the heart of the gospel, that Jesus became sin. He made him who knew no sin, sin. वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसने उसे गुनाह हमारे लिए बना दिया. This is a double impute, double crediting, the great exchange as defined by many. He made him who knew no sin. He, God, made him, Jesus, who knew no sin. यीशु गुनाह से वाकिफ ना था. Jesus did not know sin. Let me begin by saying this, loved ones, कि खुदावंद यीशु मसीह, before incarnation, he still existed. इससे पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखें, Jesus existed throughout eternity. Because he is God, he was in complete harmony and fellowship with God the Father. बाप के साथ वो एक था. At all times they gazed at one another, they worked together, they were in oneness. वो एक थे, और क्योंकि वो खुदा था, गुनाह उसके साथ, उसके करीब नहीं था. Jesus was holy before he was incarnate, because he existed in all eternity.
He was holy. His thoughts were holy. His ways were holy. His motives were holy. He could not see sin because he was God. And then God became man. फिर जो खुदा है वो एक उसने इंसान का रूप ले लिया. God became man. This is the thing that most philosophers, most thinkers of the time, ये वो बात है जो आज भी जो सोचने वाले लोग हैं, philosophers हैं, they are unable to break this mystery. कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा इंसान बन गया. ये कैसे हो सकता है? How could it be that he who is infinite would come and live between the finite? वो जो creator है वो creation का रूप ले ले. It is beyond the comprehension of our puny minds. हम अपनी छोटी सोच से ये बात नहीं समझ सकते कि किस तरह है कि सारी कायनात को बनाने वाला खुदावंद एक छोटे से इंसान के रूप में आ गया. It is a mystery of ages. It is a mystery of ages. Both in history and present. तारीख बताती है और आज भी ये सच है कि बहुत इंसान हैं जो कोशिश करते हैं कि हम खुदा बन जाएं. That we will live on forever. We would do things that will extend our time here on this earth. But only in Jesus do we see that God becomes man. सिर्फ यीशु की जात में ये देखा जाता है कि वो जो खुदा है वो एक इंसान के रूप में आ गया. He took on flesh. Jesus brought himself to limitations. In every form and way, he became like you and I. आपकी मानिंद आपका यीशु बना. Let that sink in for a minute. Jesus became like us. You're like, I go through so much, I struggle so much. Jesus knows about it because he became like us. Scriptures tell us, kalam batata hai, he became tired, uska jism thakta tha. He became thirsty, उसको प्यास लगती थी, उसको भूख लगती थी, उसके आंसू बहते थे, उसका दिल दुखता था, वो दोस्तों के साथ हंसता था, वो मेरे और आपकी मानिंद बन गया. Hallelujah. He became like you and me. Just like you and me. No different. Just like you and me, except without sin. हर चीज में हमारी तरह, लेकिन गुनाहगार नहीं था वो. He was without sin. This is amazing to think. Just think about the Jesus of Nazareth. उस यीशु के बारे में सोचिए जो नाज़रेत में था, इंसान के रूप में, लड़कपन में, जवानी में, आपकी और मेरी मानिंद उस जमीन पर वो चलता था जिस तरह मैं और आप चलते हैं. लेकिन सोचिए that he never sinned. कभी भी छोटा हुआ उसने कभी अपने माँ बाप के खिलाफ गुस्ताखी ना की. He did not sin. कोई गुनाह नहीं उसने किया. कारोबार में कोई गुनाह ना किया, उठते बैठते कोई गुनाह ना किया, अल्फाजों में कोई गुनाह ना किया, सोच में कोई गुनाह ना किया, अपने खिलाफ, खुदा के खिलाफ, किसी के खिलाफ उसने गुनाह ना किया. वो आपकी मेरी मानद जमीन पर चला लेकिन गुनाह ना किया. कैसा यीशु हमारा. He made no sin. He committed none. He stepped into time, took the form of a human like you and I. He felt every emotion. ये नहीं कि यीशु यहाँ आया तो बस हंस के ही चला गया. No, he felt every emotion. He felt it just like you and I feel. What are the emotions you are feeling? वो कौन से जज्बात हैं जो आप फील करते हैं? याद रखिए आपके यीशु ने वही जज्बात फील किए थे. Amen. He was just like you and me. He felt everything physically, but he did everything without sin.
पहला यूहन्ना 3 बाब 5वीं आयत. 1 John 3 verse 5. And you know that he was manifested to take away our sins. वो इसलिए आया, वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो हमारे गुनाहों को लेकर चला जाए. और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए. पर और उसकी जात में गुनाह ना था. कहो आमीन. 1 Peter 2:22. 1 Peter 2:22. Who committed no sin. कोई भी गुनाह नहीं, कोई भी गुनाह नहीं. कौन है ऐसा दावा कर सके? कौन है जो किसी के बारे में ऐसी गवाही दे सके? There is no one who can profess this, no one who can claim this, and no one who can say this as a testimony to someone else except for our Jesus. Amen. सिर्फ यीशु ही था who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. उसने ना गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से कोई मकार की चीज थी. Never. बहुत हैं वो कहते हैं, listen, he was God and man, क्योंकि वो खुदा और इंसान था. You know, he was able to have these superpowers to not sin. No, please don't understand it that way. Don't understand. He wasn't 50-50. He was 100% human, 100% God. वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था. He had the complete nature. आपके और मेरे अंदर एक nature है, एक human nature है. But in Jesus, the man of Nazareth, the one who walked this earth, within him was the nature of man, and within him was the nature of God. He was full and complete. कामिल तौर पर वो खुदा था और कामिल तौर पर ही वो इंसान था. और इंसान होते हुए कामिल तौर पर उसने कोई गुनाह नहीं किया. You're like, wow. It is like, wow. Even as the demons would come before him, they would say, "You're the Holy One of God." But the mystery still is unfolding, that how is this? And maybe we will never comprehend this. शायद ये भेद जब तक हम रूबरू खुदावंद के ना होंगे हमें ना समझ आए. पर ये ही कलाम की सच्चाई है कि वो कामिल शख्स और कामिल खुदा था. कहिए आमीन. Hebrews 4:15. इब्रानियों 4:15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with us, with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. सारी बातों में हमारी तरह वो आजमाया गया, लेकिन गुनाह ना किया. I tell you, some days, कुछ दिन होते हैं कि सुबह की 2-3 आजमाइशें जो हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह डील कर लेता हूं. चौथी आती है तो कहता हूं वापस घर चलते हैं, ये आजमाइश भारी है. पर यीशु के ऊपर आजमाइश पे आजमाइश पे आजमाइश पे आजमाइश, temptation over temptation over temptation over temptation kept coming. But praise be to our God that Jesus did not tremble, he did not buckle up under that pressure, but he remained without sin. कोई हस्ती जमीन पर नहीं है जो ये दावा कर सके सिवाय हमारे यीशु के. कहिए आमीन. Only Jesus, only him. हर तरह की आजमाइश. You're like, even, for young kids, because you all are joining us today, thank you. We're tempted as little kids. We're tempted to talk back. We're tempted to say things to people older than us. We're tempted to think wrong things. Jesus was also. I'm sure Joseph pushed him around like people do in the Middle East. But he remained without sin. He remained without sin.
Jesus was approached in Matthew 22 by a lawyer, and he asked Jesus, what is the greatest commandment? सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे अव्वल हुक्म क्या है शरीयत का? And Jesus said, love the Lord your God with all his heart. No, with all your heart. Love the Lord with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. अगर ये सबसे greatest commandment है, यस्सु की जुबानी, if this is the greatest commandment, then I tell you, loved ones, हम में से हर कोई, including pastor साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम ये रोज तोड़ते हैं, रोज तोड़ते हैं, हमसे रोज ये होता है। ये सबसे ऊंचा हुक्म है, और जो इस हुक्म को तोड़ता है वो सबसे फिर बड़ा गुनहगार हुआ, क्योंकि ये सबसे ऊंचा हुक्म है। सिवाय यीशु के no one loved God with all of his heart except Jesus. यीशु मसीह वाहिद थे जिन्होंने अपने जमीन पर जब वो थे खिदमत में, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दिल से खुदा बाप को मोहब्बत की। No one else. बहुत हैं जो इस दावा भी कर दें कि हम खुदा के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इंटायरली खुदावंद के जलाल के लिए नहीं करते। ये सच मैं कह रहा हूं। I'm standing right here before you too. हम कहते हैं हम यीशु के खुदावंद के लिए ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर उसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए ये कर रहे हैं, और यस हम कहते हैं कि हम उसके जलाल के लिए कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं। थोड़ा सा हमें होता है कि हमारी भी टोर बने। सिवाय यीशु के, he was the only one who served God only for the glory of God. He was like, no, it's to the glory. जो कुछ भी करो, let it bring glory to my Father. मेरे बाप को इसमें जलाल मिले, उसकी मर्जी पूरी हो। वाहिद एक था जिसने इस हुक्म को पूरा किया। वाहिद एक इंसान, no one else. There has never been anyone who loved God as God deserves to be loved. Yet Jesus in every moment loved God as he ought to be loved. No one has ever done deeds that were entirely for the glory of God, yet Jesus did all his deeds for the glory of God. Another thing, Jesus was morally perfect. Morally perfect. Perfect. The moral law that was given by Moses, जो मूसा शरीयत लेके आया, Jesus kept every law. कोई और इंसान नहीं है वो जो ये कह सके। जब हम इंसानों के साथ ही यीशु को जोड़ते हैं, तो कोई इंसान ना था ना है, और जब तक जमीन है ना कोई इंसान होगा जो मूसा की शरीयत को 100% पूरा करे, सिवाय यीशु मसीह के। Matthew 5:17, मत्ती 5:17 आयत। Do not think that I have come to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. No lie, deception was ever from his mouth. Yeshu Masih was spotless. Every aspect of the law, हर जो इस शरीयत का हिस्सा था, every aspect, dietary law हो, civil law हो, social law हो, moral law हो, जितने भी laws थे जो मूसा की तरफ से आए, मूसा के वसीला से आए, एक शख्स था जिसने उन सब को पूरा किया, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। Hallelujah. No one lived more right, no one lived more righteous than Jesus Christ. Christ fulfilled the law. Charles Spurgeon said, there never was such a law fulfiller. There never was such a law fulfiller. He did it willingly, and he did it from all of his heart. That's Jesus. The Bible says he
became sin. अगर मैं यहां ही बात खत्म कर दूं कि यीशु पाक था, यीशु में कोई गुनाह ना था, यीशु ने किसी के खिलाफ कभी गुनाह ना किया, उसने बाप को पूरे दिल से मोहब्बत की, उसने शरीयत को पूरा किया, अगर बात यहां पर ही खत्म हो जाए, it is a wonderful message. But the twist comes कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, गुनाह बना दिया गया. There's an implication of what it means to become sin. Just briefly, go with me to Leviticus chapter 16. Ehbar, 16वां बाब, छठी आयत. Aaron shall offer the bull offering as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself for his house. He shall take 2 goats, present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Then Aaron shall cast lot for the 2 goats, one lot for the Lord and the other as a scapegoat. And Aaron shall bring the goat of which the Lord's lot fell, and offer it as a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make atonement upon it, and to let it go as the scapegoat in the wilderness. This is what it meant to have the sins imputed, to have that transfer, that credit shifted. सारा कर्ज एक के ऊपर है और अब सारा कर्ज किसी और के ऊपर चले जाना. That's what that meant. और पुराने अहदनामा में यही खुदावंद ने हुक्म दिया कि 2 बकरे लाओ. Everyone say goats. एक जो है, it will be a burnt offering. और दूसरे के ऊपर जो काहिन था, the priest would lay his hand on the other goat. और सारे लोग जो थे उनके गुनाह were imputed on the goat. This was the picture of the 2 things Jesus would do himself. ये दोनों चीजें खुदावंद यीशु मसीह अकेले ही करने वाले थे. That he would be the sacrifice that goes before God, and he would be the one that would take away the sins of man. Amen. Are we together so far? The weight of sin was about to come on him. Just as the sin of the nation of Israel was coming upon the goat, इस तरह जिस तरह सारी बनी इस्राएल के गुनाह जो थे वो एक बकरे के ऊपर आने वाले थे ना, सारी दुनिया के गुनाह एक यीशु के ऊपर आने वाला था. एक शख्स. The weight of sin, जो गुनाह का भार था, बोझ था ना, it's all coming on one man. I think of children who've never been exposed to filthy language. जरा सोचिए कि आप अपने बच्चों को महफूज रखते हैं, कभी भी घर में गाली गलौज नहीं होती, यहाँ हमारे टीवीज पे भी ऐसी वीडियोस नहीं आती जहां पर गाली हो. We want to keep them safe. और कोई उसी बच्चे को उठा के तो ऐसी जगह पे रख दे where it is just coming like a fountain. That's the experience that Jesus is about to have. ये वो तजर्बा है जो होने वाला है. This is about to happen. All perversion, all deceit, all heinous types of crimes, all murders, all abusiveness, one after another, after another, after another, is coming on the shoulders of Jesus. गाली गलौज तो बड़ी छोटी चीज थी, लेकिन हर तरह का गुनाह, उसका बोझ एक यीशु के ऊपर आ रहा है.
जरा सोचिए कि हम बच्चे को, we keep a child in a very hygienic place, साफ सुथरा रखते हैं, germs से preserve करते हैं. We don't want our kid getting sick, we don't want this. और उसको कोई उठाता है और किसी slum में फेंक देता है, where there's no hygiene, where there's no toilet, where there's nothing. एकदम उसको इतने गंद में expose कर देते हैं. या सोचिए अगर कोई छोटी बच्ची है, उसको कोई उठाकर किसी कोठे पर रख देता है जहां पे हर तरह का गंदा इंसान उसको छू रहा है. Imagine the weight and perversion of that. That is the weight that Jesus is about to have on his shoulder. He has never felt the weight of guilt. कभी भी ये एहसास से जुर्म का जो बोझ है यीशु ने महसूस नहीं किया. और अब सारी दुनिया के गुनाह का बोझ और ये गिल्ट जो हर कोई महसूस करता है. You know, when I make a mistake और उसका बोझ मुझ पर आता है ना, I know how painful that is. अगर मुझसे गुनाह हो जाए और वो गिल्ट जो है मेरे अंदर उभरे, I know how much it bothers me. But imagine others time 8 billion are upon the weight of Jesus, upon his shoulders. That's what Jesus is feeling on the cross. The physical pain is nothing. वो कोड़ों की मार, वो कांटों का ताज, वो पांव और हाथों में कील तो बस शुरुआत थी उसके दुखों की. दुख तो अब ये आ रहा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, अब इतना एक्सपोजर एक ही वक्त पर उसके ऊपर आता है. That's the implication. कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो गुनाह बन रहा है. And it doesn't stop there. अब बात यहां पर ही नहीं रुक रही. अगर हम यहां पर ही ठहरें कि खुदावंद he was sinless और खुदावंद पाक था, और थोड़ा सा आगे आए और सब गुनाह उसके ऊपर आ गए और यहां पर ही बात रोक दें, फिर भी बहुत है. पर बात यहां पर भी फिनिश नहीं हुई. अभी तो अदालत बाकी है, अभी तो कहर बाकी है, अभी तो बाप से जुदाई बाकी है, अभी तो ये दुख और बढ़ने वाले हैं. वो जो गुनाह ना था गुनाह बना. ये बहुत गहरी बात है कि वो पाक है और वो गुनाह में अब बिल्कुल ही is saturated under the weight of sin. और क्योंकि वो गुनाह के नीचे है, it is about to turn up, it is about to get worse. अभी तो उसने बाप की जुदाई और एक राज़िक खुदा की जजमेंट सहनी है. That's what it means that he became sin. That's what it means. The weight of the sin is not enough. अगर गुनाह की बात करें तो गुनाह का वजन ही काफी नहीं. The wrath of God, the due justice of man still has to be satisfied. Pastor John MacArthur said it this way: he treated him as if he committed every single sin ever committed by every person who would ever believe, who in fact committed none of them. Hanging on the cross, he is the holy, sinless, spotless lamb. But God is treating him as if he lived my life. The life of every sinner. कि बाप जो रहम से भरा हो. The God we serve, who is a merciful God, has to withhold the mercy from Jesus. Because everyone's sin is upon Jesus. सारियों के गुनाह उसके ऊपर आते हैं. तो बाप जो रहम भरा हुआ खुदा, वो रहम रोके हुए, he has to hold his mercy. Jesus committed no sin. Sin was placed upon him. And God treated him as the sinner that we are. Christ became a curse
यीशु लानती बना. He became a curse. यीशु लानती बन गया. The perfect beauty of God became a curse. Galatians 3:13. गलतियों 3 बाब. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. वो हमारे लिए लानती बना. That's the cost of reconciliation. This is the love that's demonstrated. I often wonder why we hold back in worship. And then I think maybe we don't understand this. कि वो सारी इज्जत के लायक है. वो सारी तमजीद के लायक है. हशमत के वो ही लायक है. क्यों हम रुकते हैं उसकी प्रस्तिश के लिए? वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, गुनाह बना. He became sin. जो हम मुबारकबादियां हम पढ़ते हैं, अगर हम उनको उल्टा करें, मुबारकबादी की जगह लानतें, तो कौन है जो लानती हैं? और किसी ने ऐसे लिखा, The blessed are granted kingdom of heaven, but the cursed are refused. जो लानती हैं वो refuse किए जाते हैं. You and I have been given the kingdom because when Christ was on the cross, he cried out, my God, why have you forsaken me? The blessed are recipients of divine comfort. जो मुबारक हैं वो तसल्ली पाते हैं. इसलिए because Christ suffered the divine wrath. The blessed are satisfied because Christ suffered misery. The blessed receive mercy because Christ was condemned on the cross. The blessed shall see God because Christ was cut out from the presence of God. The blessed are the sons and daughters of God because Christ bore our disgrace. He who knew no sin became sin. As we are preparing our hearts for the Lord's table, जब हम अपने दिलों को खुदावंद की मेज के लिए तैयार करें, let that rest in our heart. Let that rest in our hearts. कि वो जो पाक खुदा था, जो पाक इंसान था, वो गुनाह बना. और हर लानत जो गुनाहगार के ऊपर आनी चाहिए थी, वो बना, ताकि मैं और आप इस मेज में हिस्सा ले सकें और रास बास ठहराए जाए.